EV adoption, if you'll see, is equally high on tier 2, tier 3 cities. Okay. जितनी भी रिक्शा हैं, they have started converted into e-rickshaw. If say suppose you are going from Delhi to Chandigarh, you can plan your route. You will see कि that अच्छा मुझे 2 घंटे में ये चार्जर मिलेगा, मैं सोनीपत पहुंचूंगा, जब तक मैं 2 पराठे खाऊंगा तब तक मेरा गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा. When you start from Delhi, you book the charger. Okay. आप निश्चिंत हो. Tell me top 3 sectors that's going to be a future of India. I will say AI and anything that you start doing in green sustainability. Because sustainability is going to be the near future. Now everything will be on sustainability. If anyone has to do something very different, then the booming sector will be on mental status, psychology. जिंदगी के चैप्टर ना बहुत सारे हैं और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया लगा आता जाएगा, करते जाना है. तो नथिंग इज परमानेंट, योर सक्सेस नॉर योर फेलियर, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग. Hello and welcome to Powering the Future, an exclusive HT Smartcast episode where we bring you an inspiring stories of innovation, sustainability and leadership in the evolving world of technology. I'm your host Radhika, and today we have a very special guest, Dr. Lalit Singh, CEO of Telio EV, a leading EV charging management solution provider. He previously served as the company's Chief Growth Officer and has a strong background in sales and marketing with a focus on technologies like AI, ML, EV, and renewable energy. Well, he's also a storyteller. This was all I could get from Mr. Google, but let's get into the episode and know more about Dr. Lalit's story and humans of EV. Hi, Dr. Lalit. Hey, hi, Radhika. Hi, how are you doing? I'm doing great. How about you? I'm good too. Dr. Lalit, what an incredible journey. Like Dr. Lalit and now into EV and this green energy. What made you this shift? So first of all, thanks for having me here, Radhika. So for me, my journey is I always say that it's a roller coaster. Yeah. And I'm really thankful to God, and God has been very kind on me. That's true. Yes. So God has blessed me with a very good family, good brother, very nice, beautiful wife and 2 kids. But the journey from doctor to now to EV sector, it's very exciting. And I'll tell you that in 90s, if I go back in 90s when जब मेरा high school था, so I'll tell you very honestly, I got a very low mark in class 10th. Okay. और जब मेरे को 10वीं में रिजल्ट आया तो आई रियली फेल्ट कि दैट यार ये तो दुनिया में आज सारा काम ख़त्म है कि इतने कम नंबर. और उसी समय मन में आया कि नहीं यार, मुझे ना कहते हैं कि कॉमर्स लेना चाहिए. बट इन 90s एरा आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे 3 इडियट में था. 3 इडियट में क्या कहता है कि या तो इंजीनियर बनोगे या तो डॉक्टर बनोगे. तो माय फादर सेड कि यू बिकम अ डॉक्टर, बट द नंबर वाज लेस. तो बट एनी हाउ वी मैनेज्ड इट. वो हुआ, वहाँ से एडमिशन मेरा, आई टुक बायोलॉजी और then and I made it. For the rest is a history that I choose to be a doctor there rather being an engineer. But वो inner call कभी अंदर से नहीं आ रहा था कि that I'll be always had that itch कि कुछ अलग करना है. हाँ, कि मतलब वो डॉक्टर नहीं है. तो कुछ जगह तक मैंने अपने पापा की सुनी. But the time I graduated from medical college, this time I had कि that I decided on my own कि that I'll not practice. Okay. I'll not practice. Let me try something different, and I got a very good opportunity just after passing to insurance. Yes. So मुझे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़िया जॉब मिली. अब उसमें भी 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि मैं सबको कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आपका फॉल बैक सिस्टम होना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग अ रिस्क. आई एम अ वेरी रिस्क टेकिंग पर्सन. मतलब मेरी रिस्क टेकिंग एपेटाइट शुरू से लेकर आज तक बनी हुई है. बट आपका फॉल बैक सिस्टम भी बहुत तगड़ा होना चाहिए कि अगर आपको कुछ हो तो कोई हो. तो आई हैड दिस 2 people in my life, my elder brother Amit and my wife Abha. So this time Abha, I asked Abha, I was newly married. I asked Abha कि that यार डॉक्टर नहीं करना है, कुछ क्या करें. तो इंश्योरेंस में जॉब था. एंड
I believe me कि that 14 years when I was in insurance, I learned a business, I learned management, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, सेल्स सीखी, मैनेजमेंट सीखा और सब कुछ सीखते सीखते बट 14 साल में आप 14 ईयर से एक ही सेक्टर में थे कि कंपनी में थे? एक ही कंपनी में था. I worked for only one company. Okay. Right, and then from there, after 14 years of working, I decided one day again कि that यार अभी भी ना कुछ और करना चाहिए. See, then why not to start of something of my own? So then I called my elder brother Amit. Okay. This time he is the fallback for me. I called him, यार भैया कुछ करना है. And I'm like 14 years, मुझे अच्छा है, मुझे career growth अच्छा मिला, everything I got it, what I really wanted to be in a sector. satisfaction अभी भी हाँ, वो एक अर्ज आ रहा था अंदर से, यार कुछ करना है. And when I was working for insurance, I was inclined towards IT, that I was always curious. So Amit said, okay, why don't you join us only? Because Amit started his journey in 2014 only. Bhaiya started in, and that's how our group Tell You started in 2014. He said, मैंने कहा यार IT मेरे को आता ही नहीं है. तो भाई मैं आके कैसे, इंटरेस्ट है बट एक होता है ना कि आपको आना भी चाहिए. He said, come, join. Let's start working so पहले together. उनकी थी ये, हाँ, उन्हीं की कंपनी उनके, है. हाँ, Amit started Tell You Labs. He started. Okay, So Tell You then we Labs. started with, when I joined in, we started with Tell You EV And you joined in which year? in 2020. 20. एकदम peak COVID. कोविड के, time यस, you took बिल्कुल the risk. बिल्कुल बिल्कुल उसी वक्त कहते हैं ना, घर में रह के वो भी था कि यार कुछ नया करना है. तो उसी समय एकदम दिमाग में आया. आई कॉल्ड अमित एंड अमित रियली, भैया रियली हेल्प्ड मी. Okay. दैट ही सेड कि ओके आ जाओ, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुगेदर. और सारे अपवादों को छोड़ के, जहाँ दो भाई साथ में काम नहीं करते हैं, हम लोगों ने कहा नहीं. So from you moved from any city to another city? नो इंदौर. इंदौर ओनली. वहीं पे सेटल रहे और उसको करके वहाँ से फिर ईवी की जर्नी शुरुआत हो गई. तो इस तरह से मैं ईवी में आया. तो दो चीज़ें बड़ी इसमें मैं अपने लिए बड़ा कहता हूँ कि क्योंकि लाइफ में जब मैं अपनी लाइफ को वापस बार बार देखता हूँ और अभी तक नाउ आई एम 45, तो मैं जब देखता आया तो एक चीज़ सीखी कि ज़िंदगी के चैप्टर ना बहुत सारे हैं और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया लगा आता जाएगा, करते जाना है. तो नथिंग इज़ परमानेंट, nothing, either your success nor your failure, but you have to keep on doing. तो मैं बड़ा एक अच्छा, जिस लाइन को मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ और आज भी मैं बार बार कहता हूँ कि फैसला होने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूँ. सो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको मैं बड़ा चरितार्थ करता हूँ अपने ऊपर और कोशिश करता हूँ मैं वैसा रहूँ. हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नए गाता हूँ, गीत नए गाता हूँ. वाह वाह, what a confidence. I mean, with that confidence, let's go beyond and know about Humans of EV. Yeah. आपने कैसे start किया? How did this idea came? And why EV only? Okay, so as I said कि हम Tell You EV का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था in 2021-20. We started making Tell You EV. Okay. अब Humans of EV का जन्म भी अपने में बड़ा अलग तरीके से हुआ. Okay. So हम जब Tell You EV बना रहे थे तो Tell You EV बनाते समय एक चीज़ समझ में आई कि लोगों में there were a lot of myths and confusion around the people for the EV. So एक दिन का बात है, मैं मेरे बड़े भाई अमित और मेरी वाइफ आभा, हम तीनों डाइनिंग टेबल पे we were having a breakfast there. So this is the problem that we were discussing there, कि that यार how to solve this problem, कि that EV is very new. So Amit said, भैया immediately said, let's do one thing. Why not we create a community? और उस टाइम तो सब कोविड में घर पे भी थे. No, this is a post-COVID. It is 21. Okay. 21 post-COVID. Our Tell You EV we started, so we had an experience from Tell You EV that what are the challenges the आम आदमी is having. So we were having a discussion around that कि ये वाला जो myth और confusion है, because if you remember that time कभी EV में आग लग गई कि EV में ईवी गाड़ी में रेंज एंजाइटी है, चार्जर नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे चला रहे. पे ईवी
हाँ, ऐसे क्वेश्चंस खूब चल आ रहे थे क्योंकि ईवी इज अ वेरी नीसेंट सब्जेक्ट फॉर इंडियन मार्केट, तो वी थॉट ऑफ नहीं यार, लेट्स ऑन अ डाइनिंग टेबल वी डिसाइडेड लेट्स कम विद अ community wherein we will also speak, we will also give our thoughts, and we'll bring other people also to give their thoughts. So वहाँ से ये कम्युनिटी का जन्म। अब इसका नाम जो नामकरण है वो भी जबरदस्त था। तो नामकरण भी ऐसा हुआ कि it was by the people for the EV. So we decided to name it as Humans of EV. So Humans of EV, within this is 2.5 years, if you see that it is having near to 60,000 followers on LinkedIn. Yeah. 27,000, very precisely I'll tell you, 27,000 subscriber we have on for our magazine, The Green Route. The Green Route. And we have a very strong footprint. You name any social media now, we are having that kind of a thing. Okay. And it is for the people, I'll say. And we are bridging the gap between like I'll say public, product and policy. Yeah. These three. And ये पूरे Humans of EV की जन्म गाथा है कि कैसे Humans of EV आई कि it was all about Telio EV से जो सीखते सीखते हम आ रहे थे, क्योंकि एक प्रोडक्ट, एक कंपनी हम ऑलरेडी बना रहे थे, वहाँ से जो एक्सपीरियंस था, जो चैलेंजेस थे, वो हमने यहाँ पे वहाँ से वो सीख के यहाँ पे लाया। आपने जिस ईयर में ईवी का सोचा था, विच इज़ 2021, तब इंडिया वाज नॉट टू अवेयर अबाउट ईवी सेक्टर। वर यू नॉट स्कैर्ड? आई एम श्योर आपकी जर्नी में जैसे आपने बताया कि आपको रिस्क लेना पसंद है, बट ईवी उस अभी भी बहुत ही नीश सेक्टर में है, नॉट एवरी वन इज़ टू अवेयर ऑफ द चैलेंजेस एंड द गुड पार्ट अबाउट इट। तब आपको क्या क्या चैलेंजेस लगे थे व्हेन यू वर स्टार्टिंग विद दिस ईवी, टेलियो ईवी? Telio EV, when we started, see, every business, कोई भी business, when we start, it has a teething problem and challenges are always there. So when we started, the first thing was since we took a software route, we as in software company, we took a software route. Let's enter into the market through software. And the problem which we are solving through Telio EV is that range anxiety. एक problem था range anxiety, और कि that and the availability of the charger. So we decided we'll make a product which will help any of the end user EV owners to locate, navigate and book the chargers. थॉट तो आ गया, डिसाइड भी कर लिया कि यही बनाएंगे, बट व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट, द प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग इन। द चैलेंज इज नॉट द प्रॉब्लम, द चैलेंज इज बिकॉज देयर वाज नो प्रूवन डेटा। Okay. There was no proven data because EV is a very nascent subject. It is a nascent subject for Indian market, though European markets are evolved, but for Indian market there was no proven data. That's number one. Second, startup, we are a startup company, right? तो उसके अपने एक challenges होते हैं। अब उसके challenge में क्या आता है कि भाई we had a limited fund, अब उस तरह का talent भी लाना है। तो but ये दो तीन चीजें थी, challenges were there, but we prioritized it. We were very focused कि यार इसको एक एक चीज को करेंगे and let's have a priority, and we decided what things to be done first. First thing to be done first. Of priority, how did you क्या क्या आपने प्रायोरिटी दी इन टर्म्स ऑफ फंड? आपने सबसे पहले किस में लगाया, देन आपने सबसे पहला मीडियम कौन सा चूज किया ऑन सोशल मीडिया, कैसे होगा पूरा होगा स्टेप बाय स्टेप? अभी तो हम सोशल मीडिया पे गए ही नहीं थे, क्योंकि प्रोडक्ट वाज इन इंक्यूबेशन फेज में था, प्रोडक्ट जन्म ही ले रहा था, बना ही रहे थे। तो सबसे पहली जो चीज थी इट वाज अ सॉफ्टवेयर, तो इंजीनियरिंग, तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट थे पहले आपने उनको वहाँ पे, मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वी स्टार्टेड रीडिंग, वी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट ईवी, बिकॉज एज आई सेड दैट देयर EV is was a very new subject, तो उतने लोग भी अवेलेबल नहीं थे, तो हमने अपना खुद से पढ़ना शुरू किया। हम यूरोप में पढ़े, यूरोप को मार्केट को समझे, और वहाँ से वो चीज़ें लाना शुरू किया, और अपने होम ग्रोन कहते हैं ना, होम ग्रोन टीम तैयार की, और वहाँ से हमने उसको किया। तो सबसे पहले हमने अपना ऐप बनाया। ऐप को आज उस ऐप पे, टेलियो EV ऐप पे अगर आप देखोगे तो 21,000 सब्सक्राइबर के लगभग उसमें हैं कि जो हेल्प कर रहे हैं टू लोकेट, नेविगेट, बुक द चार्जर्स, इन सब चीज़ों के लिए हेल्प कर रहे हैं। फिर उसी समय पे हमने बैकएंड भी बना लिया अपना। बैकएंड में हमने बिजनेस ओनर के लिए बनाया, क्योंकि हमने एक दूसरा चैलेंज देखा, यार बिजनेस ओनर को भी बिजनेस करने में ही हैड अ प्रॉब्लम दैट ही वाज नॉट एबल टू, इफ देयर इज अ फॉल्ट इन अ चार्जर, ही वाज नॉट एबल टू असेस दैट, राइट?
and how is his charger performing, what is the money collection of the day. So we made the complete 360 degree and 360. we delivered it to them. Okay. So you mentioned about the range anxiety point, and you have already covered कि आपने उस चीज़ को कैसे tackle किया. I was reading and I just got to know this data that in India we have only 12,000 charging stations, Mhm. and experts says that we need 50 times more, Right. 50x more by 2030. So what's your take on that? See, that's right, that the chargers we require, more number of chargers Yeah. are required, and it is not 12,000 now. Chargers are increasing day by day. Day by day. Now it is near to, if we have to check the current data, it is near to 21,000 chargers we have public charging. Okay. But Across India. across India, Across it is, India. and now OEMs have started. See, it is completely a chicken and egg story कि पहले चीज कौन आएगी, डिमांड आएगी कि सप्लाई आएगी. अब वो दोनों चीज अब अगर आप देखो, पहले if we go back to 2020-21, there were hardly any OEM making except for Tata. But now we have Mahindra coming in, BYD is there, Mercedes, now Tesla. Now Tesla has come in. So now the demand has been created and supply will automatically pick up. That's for the sure. And by 2030, you are going to see a real boom in this market. Okay. Yeah. So आपने बात करी demand and supply की, and obviously EV is growing now. EV is the future of India, and according to data, till now, last year over 1.5 million EVs were sold. Right. Especially when you come to your metro cities, the demand is more. But when you go to tier 2, tier 3 cities, there are a lot of challenges. When you were starting Humans of EV, did you see any gap in non-metro cities? And if yes, what were those gaps? So firstly, I'll small correction here, that EV adoption, if you'll see, is equally high on tier 2, tier 3 cities. Okay. Maybe not in a form of four-wheeler. Okay. But Correct. if you see, if you go like प्रयागराज जैसे शहर में आप जाओ, और कहीं पे भी आप जाते हो जो छोटे शहर हैं, कानपुर, इंदौर, और कहीं पे भी, I'll not say tier 2 city, not that small also, but आप वहाँ पे देखोगे जितनी भी रिक्शा हैं, they have started converted into e-rickshaw. Right? Yeah. Numbers are very good. मध्य प्रदेश में एक शहर है बैतूल. अगर आप जाएंगे, बड़ा छोटा सा शहर है बैतूल, बट वहाँ पे आपको जब ई रिक्शा, when you'll find ई रिक्शा का बाढ़ है वहाँ पे. So it is not that EV is only getting adopted in metro. No, it is equally fast. Getting adoption is very fast there in tier 2, tier 3 cities, but the form is different. Maybe not in form of car, but in form of three-wheeler or two-wheeler. और आपको क्या लगता है कार कब तक आएगी हमारे? Now going forward, you will see that since number of OEMs have increased, now you have an option, right? Earlier it was only Tata. Now you have an option coming in, right? As I said, that BYD है, Tesla है, Mercedes आ रही है, Mahindra आ रही है, और Hyundai cars are coming, and then again उसमें भी कई सारे options हैं. So you have an option, and technology is also continuously improving day by day. So you will see that adoption in a very good way. Yeah. जब हम छोटे शहर जैसे बात करते हैं, from all these tier 2, tier 3 cities, I guess वहाँ पे infra है, the ecosystem is there. But what I feel personally, acceptance is low. People are not ready to accept. जब भी कोई new चीज़ आती है, they have some kind of fear. Right. They take time to accept the new technology. You think this will, your company or Humans of EV के through, you will be able to cover this fear and you'll be able to gain that trust? See, यहाँ पे again, I'll say that if coming back to now talking on the Humans of EV and the question that you asked, right? So Humans of EV is for this purpose only. Okay. So when we started Humans of EV, the technology, the infrastructure, everything was processing, but the human stories, I'll say, then the ground realities, okay. So
these all things were broadly missing in the mainstream. Okay. Okay, brands are continuously making their products. Hmm. Government is continuously working on the policies, but how, as you said na, aam aadmi ka kya? Yeah. But what about aam aadmi? So humans of EV, as I said, that we came up with that platform that let's make a जनता की सोच, पॉलिसी मेकर की सोच, everything on one platform. So with humans of EV, we are really solving the problem of we are bridging a gap actually, bridging a gap between public policy and product. Yeah. Now let's touch upon in depth range anxiety. हमने briefly बात करी है, but इसको अगर हम थोड़ा detail में बात करें, people have this fear that batteries will run out, no charging stations, lot of fears and anxieties there. So let's talk comparison wise in as per tier 1 and tier 2, tier 3 cities. How the range of anxiety? See, range anxiety cannot be differentiated between tier 1, tier 2, tier 3. Okay, range anxiety is a range anxiety. If as a product owner, if I am owning a EV car, so I will always have a fear that to where I'll get my next charge for EV. Okay. So, but over a period of time, Telio EV is one company that we have really solved this problem. You go to our app. Okay. So this is no more a problem. Okay. The problem is solved. You check. If say suppose you are going from Delhi to Chandigarh, right? You can plan your route through Telio EV app. And you will know what are the chargers available. You will see कि that अच्छा मुझे 2 घंटे में ये चार्जर मिलेगा, मैं सोनेपत पहुंचूंगा, जब तक मैं 2 पराठे खाऊंगा तब तक मेरा गाड़ी यहाँ पे चार्ज हो जाएगा. When you start from Delhi, you book the charger. Okay. आप निश्चिंत हो, आपका चार्जर बुक है, आप वहाँ पहुँचो, जब तक आपने प्लग लगाया, गाड़ी स्टार्ट हुई, गाड़ी चार्जिंग स्टार्ट हुई, आप जब तक अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हो या नाश्ता कर रहे हो, तब तक गाड़ी आपकी चार्ज 20 मिनट्स में यू आर रेडी एंड नेक्स्ट चार्ज यू विल बी गेटिंग इट इन चंडीगढ़. सो दिस इज सी वो एक जमाने का प्रॉब्लम था, बट नाउ रेंज एंजाइटी नॉट एलिमिनेटेड, वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन इट. राइट. Now let's shift gears and थोड़ा fun segment की ओर चलते हैं. As you said, you're a storyteller. You have lot of different interests. So we'll see. This game is called This or That. Okay. I'll ask 2 questions. Couple of questions, or you have to pick this or that. Okay. Charge your EV or charge your phone? What's more urgent? Charge my phone. Okay. Good music in traffic or silent empty roads? Silent empty roads. Solar powered cars or flying EV, assuming both exist? Flying EV. Garage full of EVs or EV with one AI that talks like Jarvis? One AI. A day without Wi-Fi or day without EV? A day without Wi-Fi for me. Okay. Interview with Saurabh Trivedi or interview with Elon Musk? अरे सौरभ भाई के साथ हो जाए तो उनके तो मैं Saurabh. Okay. Work from mountains or work from office? Mountains. इंदौरी पोहा या प्रयागराज की चाट? प्रयागराज की चाट. इंदौर और प्रयागराज? प्रयागराज दिल में बसता है, तो मैं तो 100% इलाहाबादी हूँ. Now let's go back to the other side of your journey. हमने already जान ली है, काफ़ी inspiring थी, how this human of EV came into existence. You have taken a lot of risk in your life, very risk taker. Full. As a founder, if you have to go back to that journey again, your previous life, what is that one thing you would like to change? Or if not change, what is that one thing you think कि ये कुछ अलग अंदाज में हो सकता था? See, decisions I have, what I feel is that once I decided, I never regret. So ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा कि that for me कि that I going back and correcting, because what I feel is for me, आज तक जो करते हैं, जो भी decision लिया वो अभी तक अच्छा ही हुआ. So I don't have any regrets कि कुछ जाके पीछे ठीक करना है, ऐसा कोई वो आया नहीं हो in a professional life. Professional life is good. And with Telio EV, what is that one lesson you would like to tell the audience? See, हाँ, यहाँ पे एक बड़ा जो मैंने आप entrepreneur journey जिसको कहते हैं. See, one thing is what I have learned out of this journey is, one is that if you want to be a entrepreneur, conviction तगड़ा, मतलब मैं आपको कहना है, आपको जीना चाहिए उस चीज़ को. आपका consistency
and your perseverance. Okay. These Three three things. things, that's one. ये तो होना ही होना चाहिए. फिर don't be afraid of, because that is what I feel now is there is no such problem जिसका solution बना ही नहीं है. Okay. There everything is, except for human loss, everything you can solve. Everything True. you can solve. True. And I always say, जब मैं अपने को कहता हूँ, अपने शब्दों में वो करता हूँ, शायरी है, मैं कहते हैं, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफत भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. इसलिए डोंट बी अफ्रेड. करना है तो करना है. इसीलिए आई सेड यू ना कि दैट कोई रिग्रेट है ही नहीं. वंस यू डिसाइड, इट्स डिसाइडेड, लेट्स गो अहेड एंड डू इट, डू दिस. अच्छा है बुरा है आपका डिसीजन है. बट सबके पास आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि फॉल बैक सिस्टम स्ट्रांग होता है. अगर वो नहीं है, ठीक है, और कह लो कि वो फियर जो आता है ना जब हम रिस्क लेते हैं, हाउ डिड यू टैकल दैट फियर? See, fear is a conviction. You have to get convicted Okay. for that. Okay, that having a fear is good, but having extra fear, then you will not able to do the things. Because आप आधे समय डर, आप कहते हैं ना, डर ही जाओगे, फिर डर के आगे जीत है ही नहीं, डर के आगे फिर हार ही आ रहे हैं. अगर मैं नेक्स्ट सेक्टर्स देखूँ, जैसे आप यू स्टार्टेड इन ईवी, इफ समबडी हु इज जस्ट स्टार्टिंग देयर जर्नी एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ फाउंडर, एज अ स्टार्टअप लीड, व्हाट डू यू सी, व्हाट, टेल मी टॉप 3 sectors that's going to be a future of India. I will say AI and anything that you start doing in green sustainability. Because sustainability is going to be the near future. Now everything will be on sustainability. अगर आप 3 नहीं, अगर आप ये 2 चीज़ों पे भी करते रहते हो, आपका अलग है, बहुत बढ़िया. If not tech, if anyone has to do something very different, then the booming sector will be on mental status, psychology. Yes, because everyone will be in laptop. We will be requiring lot of psychologists. True. So these 3 things I'll say: AI, sustainability, and if not the tech, then go for psychology. Yeah. You mentioned about AI. AI is also another leading we see growing in India. Yeah. And sector that you are in, which is EV, is also booming. How do you see this partnership of AI and EV in your Telio EV? AI is everywhere now. Yeah. It will completely, AI will be taking place. If you see, if recently I visited Reliance, the Jio office. Everything they are coming up with an AI. If agar aap that day we met MG CIO also कि that अगर आप कार कभी MG की चलाओ तो उसमें वॉइस कमांड है, या AI आएगा या IoT आएगा, बट एवरीथिंग विल बी देयर इन AI IoT. So everyone is shifting towards there. Okay. Yeah. Dr. Lalit, you spoke about how one should take risk, how to be consistent, and no regrets in your life. So many positive things you have said on this episode. I think this episode is not just about EV. It's about taking chances in your life. Yes. Without regrets. Yeah. So somebody who's just starting or started and want to change the career or want to change the sector, what will be the one message you would like to give that person? See, if your brain and heart says something, go for it. Okay. Don't think twice on that. Okay. There are good number of examples, and I want to be one example. Like agar aap dekho, the founder of Amazon, Jeff Bezos, he was highly paid on Wall Street. Yeah. Right. He shifted. Yeah. McDonald's is another example. Yeah. At age of 52, he thought of. Yeah. Boman Irani at 44, he decided कि नहीं यार ये करना चाहिए. Pankaj Tripathi. There are a lot of leading examples. Yeah. But the only one thing for me I say, and I hope if someone really wants to take that risk, so always if your brain and heart is saying and is in one sync, go for it. Wow. That's it.
Well, that's the end of the episode, and I think I personally enjoyed this conversation. It was very fun, it was entertaining, and thank you so much for having. Thank you. Thank you so much for coming here, and thank you so much for inspiring us. Oh, thanks a lot. Thank you. And to our listeners, thank you for tuning in. If you enjoyed this episode, do like, share, and subscribe with your friends. Stay tuned for more inspiring stories. Until next time, keep dreaming, keep innovating, and let's power the future together.